Hello 7th standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. Today we will discuss the brain teasers of rational numbers as decimals. The question number 1, section A, tick the correct option. Now 0.225 is expressed as a rational number it is a decimal. When you express it as a rational number, that is P by Q, what will be the value? So 0.225, write it in the fractional form, that is 225 upon 3 decimals, so divide by 1000. Now simplify it. 5 4s are 20, 2 remains, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 0 0, 5 9s are 45, 5 4s are 20 and 0. So the answer is 9 by 40. So which is the option? Third option. So write the decimal in the fractional form. If it is 1 decimal, divide by 10. If it is 2 decimal, divide by 100. If it is 3 decimal, divide by 1000. And then simplify. A rational number P by Q can be expressed as a terminating decimal if Q, means the denominator, has no prime factors other than. Which two prime factors? 2 and 5. Isn't it? There was a question in the worksheet. It is without actual division, say whether the rational number is a terminating or non-terminating. So you have to see the denominator. If it has got the prime factors 2 and 5, it is a terminating. If you get any other prime factor, then it is a non-terminating decimal. Now question number C. Minus 7 8 by 100 is expressed as a decimal number. Now this is a mixed number. So minus in the denominator, write the question, minus 7 8 by 100 minus, in the denominator it is 100, 100 sevens are 700 plus 8, 708. Now write it as the decimal. Now minus 708, write the numerator. In the denominator it is a 2 decimals, 2 zeros, that means 2 decimal, isn't it? 1, 2. So the answer is minus 7.08. So which is the option? Minus 7.08. It is the fourth option. Now coming to question number D. 4.01325 bar. Bar is above 25. It is equal to, which number is repeated? 25 is repeated, isn't it? So 4.01325, 25, 25. So which is the option? First option. Now coming to question number E. The quotient when 0.00639 is divided by 0.213. What is the quotient? So first you have to divide and see. 0.00639 divided by 0.213. Now in the denominator it is 3 decimal. So remove the decimal. How? Write the question.
in the denominator remove the decimal by multiplying by 1000. Why? Because 3 decimal, 1 and 3 zeros. If it is 3 decimal, 1 and 3 zeros, that is 1000. Now in the denominator you got 213. In the numerator it will be how much? Into 1000. When you multiply, the decimal point moves to the right. 3 zeros, so 3 steps to the right. So it will go 0 from here, 1, 2, 3. That means you got 6.39 in the numerator. Decimal point moves to the right 3 steps. So 1, 2, 3, that is why 6.39. Now the long division you can do. So 213 and 6.39. 213, 6 you cannot divide, so 0. So you got 0. Bring 3 down. Again decimal point, the decimal point. Again 63 is small, so 0. Zeros are 63. Bring 9 down. 2 how much are 6? 2 3s are 6. 3 3s are 9. 3 1s are 3. 3 2s are 6. So quotient is 0.03. Which is the option? Third option. Hope everyone understood. सबको समझ में आया ना? तो पहले में द डेसिमल प्लेस है उसको p by q में लिखने का रैशनल नंबर कैसे? 3 डेसिमल है तो डिवाइड बाई 1000, सिंप्लीफाई इट, यू गॉट 9/40. सेकेंड में p by q, कोई भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में लिखने के वक्त वो टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? अगर द डिनोमिनेटर, q इज द डिनोमिनेटर, उसका प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 रहेगा तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा. 2 और 5 के बदले में कोई दूसरे फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अभी क्वेश्चन नंबर सी में द मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर उसको डेसिमल में लिखने का. तो डिनोमिनेटर में 2 0 है, इसके लिए राइट साइड से 2 डेसिमल छोड़कर डेसिमल पॉइंट डालो. अभी क्वेश्चन नंबर डी में 25 के ऊपर बार है, इसका मतलब 25 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए बाकी लेफ्ट साइड का जो भी है एज इट इज रहेगा. इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर है. और क्वेश्चन नंबर ई में आप लोग डिवाइड करो, डिनोमिनेटर का डेसिमल को निकाल दो. कैसे? जितना डेसिमल प्लेस है उतना 0, मतलब 1 and 3 डेसिमल है तो 3 0, इधर 3 डेसिमल है इसके लिए इंटू 1000. वही न्यूमरेटर भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप लोग लॉन्ग डिवीजन करके वैल्यू फाइंड आउट करो, बिकॉज आंसर हमें डेसिमल में मिलेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विदाउट एक्चुअल डिवीजन. Determine if 28 minus 28 upon 250 is a terminating or non-terminating decimal number. So first write the question minus 28 upon 250. अभी check करो, is it in the lowest form? No, because it is both are even numbers. So पहला है
it is not in a lowest form. अभी उसको सिंप्लीफाई करो, -28 अपॉन 250, 2 के मल्टीपल है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 remains, 2 5 जा 10. Now you got -14 upon 125. अभी डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज 125. अभी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा? 125 डायरेक्टली 5 में ही जाएगा, 2 and 3 में नहीं है. सो 5 2 जा 10, 2 रिमेन्स, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. So 125 can be written as 5 to the power 3. So when the denominator का prime factor 2 और 5 रहेगा तो it is a terminating decimal representation. So prime factors include 5 3 times. So answer -28 upon 250 will have terminating decimal representation. Are you confident? So without actual division, we will see whether it will be having a terminating decimal representation or not. Now question number B. Convert -113 by 7 into decimal. So what we have to do? We have to divide and see. Okay, it is a -113 upon 7. It's a very long division. So it will be we'll do it with the pencil. Okay, so 113 divided by 7. 7 how much za 11? 7 1 za 7. 11 minus 7, it is 4. Bring this 3 down. Now 7 how much za 43? 7 6 za 42. Now the digits, it's over. So immediately decimal. जितना क्वेश्चन में है डिजिट्स खत्म होता है, इमीडिएटली डेसिमल डालो. अभी 3 minus 2 is 1. एक्स्ट्रा 0 ले लो. 7 how much za 10? 7 1 za 7. See, I am writing here, there is no place, sorry. So that is why 10 minus 7 is 3. Take extra 0. 7 how much za 30? 7 4 za 28. Now 30 minus 28, आपको मालूम है it is 20. 7 how much za 20? 7 2 za 14. 20 minus 14, 6. Take extra 0. 7 how much za 60? 7 8 za
56. अभी 60 minus 56, 4 remains. Take extra 0. 7 how much za 40? 7 5 za 35. You will get remainder 5. Take extra 0. 7 how much za 50? 7 7 za 49. 1 is the remainder. Take extra 0. 7 how much za 10? 7 1 za 7. Now are you understanding? 1 it is repeated. इधर 1 बचा, extra 0 लिए. See 10 10. अभी 7 1 जा 7, 3 extra 0 लोगे तो 7 4 जा 28. Means it will repeat again. 1 4 2 8 5 7 1 4. It will go on. So that means it is non-terminating, isn't it? And 14 is repeating. So answer, how much it will be? It will be minus, साइन माइनस डालने का है. कितना आंसर आया? 16.14285714 एंड डॉट्स. सो इसका मतलब -16.142857. अभी 14 फिर से नहीं लिखेंगे, 1 से 7 तक ऐसे भाग डालो. This is the final answer. Understood? Now coming to the what should be subtracted from. What should be? So you don't know, that is x. Subtracted from. From के बाद जो नंबर दिया जाता है वो पहले लिखने का. -15.834 minus x to get is equal to 3.476. Okay. Now you know it is a 5 minus 3 is equal to 2. अभी 3 मिलने के लिए आप लोग क्या किए? 3 is equal to 5 minus 2. Isn't it? 5 minus 3 is 2. To get 3, you are subtracting 2 from 5. So 5 minus 2. तो वही इधर अप्लाई करो. x is equal to फर्स्ट नंबर क्या है? -15.834 minus the third number 3.476. So subtraction में सेकेंड नंबर चाहिए तो फर्स्ट नंबर माइनस द थर्ड नंबर. इधर साइन के साथ आप लोगों को लिखने का है. अभी इंटीजर का टॉपिक मालूम है ना, तो सेम साइन रहेगा. नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है तो लुक फॉर द सम मीन्स एड एंड पुट द साइन ऑफ द नंबर. सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. नाउ यू एड 4 plus 6 10 1 plus 7 8 9 10 11 1 1 plus 8 9 10 11 12 13 1 1 plus 5 6 7 8 9 and 1. In the decimal you have got ending 0, cancel it. So what is the number? Answer, it is minus 19.13. Hope you are confident of the sum. Now coming to the D sum.
4.82 decimal, write it as a rational number in the standard form. Now, the decimal, without the decimal point, write it in the numerator. Denominator 2 decimal इसके लिए divide by 100 है ना, denominator will be 100. Is it in the lowest term? No. So convert. 2 का टेबल में जाएगा है ना, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2. Denominator 2 5s are 10 and 0. So the answer is 241 upon 50. So the decimal is written in the rational number, that is P by Q form. Now find the value of 16.016 divided by 0.4. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डेसिमल है तो डिनोमिनेटर का डेसिमल निकालने का है. कैसे करने का? डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल है? इट इज 1 डेसिमल. So multiply by 10. So you'll get how much? Numerator it will एक स्टेप राइट जाएगा. 10 है ना, इसके लिए एक स्टेप, तो न्यूमरेटर आएगा कितना? 160.16 है ना, 1 स्टेप. डिनोमिनेटर में 1 स्टेप राइट मतलब डिवाइड बाय 4. अभी लॉन्ग डिविजन करो. इट इज 160.16 डिवाइड बाय 4. 4 4s are 16. 0, bring 0 down. 4 how much are 0? Zeros are, put the decimal immediately. 4 zeros are 0. Remainder is 0. Bring 1 down. 4 how much are 1? Zeros are, 4 zeros are 0. 1 is the remainder. Bring 6 down. 4 how much are 16? 4 4s are 16. Remainder is 0. Remember, in long division पहला डिजिट छोटा है तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, लेकिन उसके बाद एक एक डिजिट लेकर डिवाइड करते हैं. ये हमेशा याद रखो. नाउ इट इज द आंसर 40.04. आंसर 40.04. Hope everyone understood the question number 1, section A and B. Bye. Thank you.